Me, Priyanka Vikram Chaturvedi. Welcome to the Quint and Quint Hindi. My daughter who was at that time in grade 4. She's like, everyone who's a Khan is from Pakistan. I reprimanded her. I said, no, this is not how it works. I remember growing up in a city, and I hope that that spirit continues, which is a great equalizer. I watched Pathan, of course. I watched Pathan because A, I'm Shah Rukh Khan fan. B, I'm Deepika Padukone fan. There's an entire ecosystem who's creating that movie, and they could perhaps be BJP voters. They could perhaps be voting for Mr. Modi. You're making them jobless. There's a very famous political saying in Maharashtra की राजकारणात कोणी मित्र नसतो आणि कोणी शत्रूही नसतो. There are no friends and foes in politics. And I'm using this quote outside the house of Maharashtra MP Priyanka Chaturvedi because that's exactly how the politics of the state has been. Priyanka Chaturvedi, who was formerly with the Congress, now is a Rajya Sabha MP for the Shiv Sena Uddhav Sahib Thackeray faction, has emerged as a formidable voice of Uddhav Thackeray and his faction. So we are going to have a chat with her to ask कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है यार. Let's go. Hello. Hi guys. I would like to begin actually by pointing out a few commonalities between you and me, if you don't mind. Oh. Both of us are from Mumbai. Both of us have been to colleges in Villeparle. Oh, lovely. Are you from Mithibai? I am from Sathe. Oh, nice. Yes. That's in East. East. I wanted to ask you, were you a topper by any chance as a student? No, I was nowhere close to being a topper. But till school time, of course, I had this feeling that I should be in the top 10, which I used to be, but not the topper. Then what explains the impeccable parliamentarian record that you have? Because 78% attendance, 243 questions raised, which is more than twice of the national average, 148 debates. Now, considering that you have been such an impeccable parliament from a state which is politically riled up for the past 3 years as we see it, Shinde BJP government के बारे में आपका report card कैसा रहेगा? सबसे पहले तो मैं कहूँगी my attendance would have been 99% or 97%, पर क्योंकि मुझे विंटर सेशन में सस्पेंड कर दिया था, जिस वजह से my track record has come down, and I hate that fact because it wasn't in my control, it was controlled by the powers that be. रही बात महाराष्ट्र के रिपोर्ट कार्ड की, रिपोर्ट कार्ड आपको रोज दिख ही रही है. सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने कहा है कि this government has turned out to be impotent to be able to control just the kind of rallies that we are seeing, the love jihad rallies, the anti-Muslim rallies that we are seeing in Maharashtra. Such a progressive state. आप खुद मुंबई से आते हैं, आपको खुद को ये फीलिंग होगी कि इतना प्रोग्रेसिव राज्य में हम रहते हैं. एक सेंस ऑफ प्राइड है. हर महाराष्ट्रियन में ये सेंस ऑफ प्राइड है कि हम ऐसे राज्य से आते हैं जहाँ पे महिलाओं का सम्मान होता है, महिला की सुरक्षा पे सवाल भी नहीं उठते हैं. इट्स सच अ सेफ प्लेस. युवाओं को लेकर, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर हम वी हैव बीन सेटिंग द गोल्स फॉर द रेस्ट ऑफ द नेशन, और उधर इस तरीके के मामले सामने आए तो दुखद है. साथ ही साथ आप किसानों को देख लीजिए, जो किसान अभी अनियन प्राइजेस को लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च किया था. आप युवाओं को देख लीजिए, जो सारे बिजनेसेस हैं, जो इम्पोर्टेंट, जो कहते हैं जो मेजर इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस हैं, वो हमारे राज्य के बाहर जा रहे हैं. तो इनके रिपोर्ट कार्ड क्या दें? उनकी रिपोर्ट कार्ड तो कलंकित रिपोर्ट कार्ड है, फेल्ड रिपोर्ट कार्ड है. और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, हर महाराष्ट्रियन के आज मन में है, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ये संज्ञान लेते हुए कहा है. आपने हिंदुत्व रैलीज की बात की है, तो 50 से 60 रैलियाँ पूरे स्टेट में हो चुकी हैं. कुछ महीनों पहले मुंबई में भी एक रैली हुई थी जहाँ सारे मुंबई के भारतीय जनता पार्टी लीडर्स भी मौजूद थे. उनकी प्रेजेंस में हेट स्पीचेस दी गई. सवाल ये पैदा होता है कि वो मुंबई पुलिस जो देश में सबसे ज़्यादा बेहतरीन मानी जाती है, वहाँ एक्नॉलेजमेंट और एक्शन में इतना डिले क्यों? सबसे पहले तो मैं कहूँगी ये हिंदुत्व रैलीज नहीं है, ये हिंदुत्व को बदनाम करने का काम हो रहा है. क्योंकि कोई भी हमारा धर्म हो और धर्म से जुड़ी हुई राजनीति हो, वो विवाद की नहीं करेगी, वो भाईचारे की बात करेगी. ये नफरती रैली है. ये नफरती रैली एक राजनीतिक मंशा से की गई हैं, जैसे वहाँ पे उन्माद बढ़े. और ये तो भारतीय जनता पार्टी की पेटेंटेड
टूल है कि जहाँ पे भी उनका लग रहा हो कि उनके हाथ से सत्ता जा रही है या सत्ता पे पकड़ नहीं है, तो इस तरीके को बढ़ावा देते हैं। आज वो टी राजा हैं, इतनी भड़काऊ भाषण देते हैं, उनको किसी ने उन पर कार्रवाई नहीं की। दुख इस बात का होता है कि आज वो महाराष्ट्र की पुलिस, जो देश में ही क्या दुनिया में मानी जाती है, आज हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है, क्योंकि राजनीति के चलते उन पे भी दबाव डाला जा रहा होगा कि कार्रवाई ना करें। मैं उस पुलिस को याद दिलाना चाहती हूँ कि आपकी जिम्मेदारी आपके राजनीतिक पार्टी कौन सत्ता में है उनसे नहीं है, आपकी जिम्मेदारी वहाँ की जनता से है। संभाजी नगर में जो हुआ, आपने हमारा कार्यकाल देखा होगा, 2.5-3 साल का जो कार्यकाल था, कहीं भी एक ऐसी रैली हुई हो, कभी भी इस तरीके के भड़काऊ काम हुए हो, कहीं भी किसी तरीके की अपीजमेंट पॉलिटिक्स रही हो या किसी तरीके की डिविसिव पॉलिटिक्स रही हो। ये अंतर है उनमें और हम में, उनके हिंदुत्व में और हमारे हिंदुत्व में। MVA के रिपोर्ट कार्ड पर आते हैं, 2024 आते आते BMC चुनाव आएंगे, लोकसभा चुनाव आएंगे, अगले साल ही महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस भी आएंगे। उसी के साथ साथ पार्टीज़ के बाकी सारे जो इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि रिसोर्स शेयरिंग होता है, वोट शेयरिंग होता है, सीट शेयरिंग होता है, क्या आपको लगता है महा विकास आघाड़ी उतनी स्ट्रांगली सस्टेन कर पाएगी इन सारे इश्यूज़ को इन द रन अप टू 2024? और मुझे पूरा यकीन है कि हम कर पाएंगे। आपसी आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉलो करें, वो चलिए। आप कितने बीच में होता था, जैसे अभी आपने माननीय वीर सावरकर जी के बारे में कहा, तो उनमें और हमें बहुत अंतर है इस सोच को लेकर। हम मानते हैं कि जैसे 3 पार्टी हैं, 3 अलग अलग सोच हैं। जब हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, सुभाष चंद्र बोस जी की एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस था, बाल गंगाधर तिलक का डिफरेंट थॉट प्रोसेस था, कैसे हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी की अलग सोच हो सकती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अलग सोच हो सकती है, पर उन सबका मकसद एक था, इरादा एक था कि देश आज़ाद होना चाहिए। तो वीर सावरकर जी उनमें से एक क्रांतिकारी सोच रखने वाले थे, जो उन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। आज की जनता आपसे ये नहीं पूछ रही है कि वीर सावरकर जी ने क्या किया। आपकी जनता, आज की जनता ये भी नहीं पूछ रही महात्मा गांधी जी की क्या सोच थे। आज की जनता ये पूछ रही है हमारे रोजगार के माध्यम कहाँ हैं, महंगाई से हमें कैसे छुटकारा मिले। ये जो पॉलिटिकल करप्शन हो रहा है, जहाँ पे एक अदानी समूह को इतना मदद मिली है, अदानी बढ़ाओ कार्यक्रम 2014 से लागू हुआ और अब अदानी बचाओ कार्यक्रम चल रहा है, उस पर जनता पूछ रही है। रही बात सीट शेयरिंग की, रही बात रिसोर्स शेयरिंग की, वो सब मुद्दे हम आपसी जो बैठक होगी उसमें डिस्कस करेंगे। पर जो वज्रमुठ की आपने रैली देखी होगी, जिस तरीके से भारी संख्या में भीड़ आई है, उसी से आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र का भी सेंटिमेंट क्या है। There are a lot of difference within the parties on the local level, on the ground. Is that true? लोकल लेवल पे किसमें नहीं होता है आपस में। आप अगर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का भी है, जब हमारा अलायंस था, इतने साल अलायंस था, बहुत हमारे कार्यकर्ताओं को फीलिंग होती थी कि ये अलायंस में हम लोग बढ़ नहीं रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी गला घोटने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का आप इतिहास देख लीजिए, जिस पार्टी के साथ इन्होंने अलायंस किया उन्हीं को ख़त्म करने का काम किया है। ये वो अलायंस, वो पार्टी नहीं है जो साथ में साथ हाथ में हाथ लगा के बढ़ाएगी। तो आपस में मतभेद रह सकते हैं, पर एज फार एज ओवरऑल सेंटिमेंट है, आप ये सोच सकते हैं कि अगर हम इस रास्ते से चले तो ठीक है। हमारा कार्यकर्ता सोचेगा अगर घूमकर चलें तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, तो वो सोच हो सकती है। पर ओवरऑल सेंटिमेंट ये है कि हम सबको मिलजुल के काम करना है और एक दूसरे को बढ़ाना है। Why are the BMC elections so delayed? It is a matter of concern for every single Mumbaikar, and that is the responsibility of the government of the day. Today, a budget was passed in the Municipal Corporation of Mumbai by the Municipal Commissioner. No elected representative to put their point of view across, no elected representative to tell you where these funds should be allocated and how they should be allocated. For Asia's largest civic For body. Asia's largest civic body. And that is a matter of concern, that you are willing to let go of democratic process, accountability process, transparency process, because the surveys are overwhelmingly showing that the Shinde group and the BJP are going to be defeated at the hustings. Do you think somewhere there is an attempt to change the social fabric of Maharashtra, specifically Mumbai? Absolutely. I remember growing up in a city, and I hope that that spirit continues, which is a great equalizer. Yeah. Which home you come from doesn't matter. We go to the same schools, we wear the same uniforms, we say the same prayer, we do the same, we get the same amount of opportunities. You come from any state, you get that opportunity. What is scary for me is that
Today, the kind of poison that we are seeing, our issues are very different. Our issues is pani kahan se aayega, water taxes, education, opportunities. And that's one fabric I don't want to see destroyed, and I will continue to speak up for it. That my children also deserve a city and a society which did not look at people's surname to decide whether we need to be friends or we need to stay away, or to feel that they will convert us or they will not. We had Muslim friends, we had Muslim colleagues, students were studying together. Never thought of it, never thought of checking their surname. But you're creating that atmosphere. Do you think it's become very subconscious to take a note of the surname now? It has become so obvious. I was very shocked one day when my daughter, who was at that time in grade 4, came to me and she said, you know, Mama, there's a new girl who's come from Pakistan to study. I was like, very interesting. Who's come from Pakistan? So she said her surname is Khan. And I said, and did she tell you she's from Pakistan? She's like, everyone who's a Khan is from Pakistan. So and then I reprimanded her. I said, no, this is not how it works. She's like, all my friends were saying she's from Pakistan. I said, no, I told my daughter, I sat down with her and I told her, this is not how it works. And probably she understood, I told her that she should go explain to her friends in school. But if it has seeped in the way it has, then it is very unfortunate. Are you a Bollywood person or a Hollywood person? Totally Bollywood. Totally. What was the last Bollywood film you watched? So I watched Pathan, of course. I watched Pathan. I don't go to the theatre much anymore. But for Pathan, I made that exception because A, I'm Shah Rukh Khan fan. B, I'm Deepika Padukone fan. What was that one film that you remember of a Bollywood movie which you think iske piche hona chahiye tha boycott Bollywood? It was so bad. It could only be because of the content, perhaps. But there are many movies, but I'm not going to name them. But economic boycott nahi hona chahiye. The reason why I asked you this question because you recently in the Parliament raised this issue while you were congratulating RRR, and you also specifically mentioned Deepika Padukone, which took me back to 2018-19 when she was being threatened for a film that she did. Do you think if that trend would have stopped or that trend would have been boycotted by those in power at that point, we would not have reached this boycott Bollywood stage today? I don't think that was one trigger. There were many such triggers, that keep happening across the country. But this momentum that you're seeing across board, that is fearful. Yeah. Where as soon as you hear of Deepika Padukone heads to JNU, her immediate movie is told, there's an entire narrative which starts that boycotts her movie. And Amir Khan, a movie boycotted. Shah Rukh Khan, I don't know what he said for everyone to boycott his movies. Right now you're seeing a momentum build up across states, across cities, and through social media platforms that you need to boycott. Little do they understand that a movie is not just made on those two actor, actress, or whoever you dislike. There's an entire ecosystem who's creating that movie, and they could perhaps be BJP voters. They could perhaps be voting for Mr. Modi. You're making them jobless. Yeah. By making a movie flop and lose money. You're taking away opportunities from those who perhaps are voting for y'all. Where do you see Maharashtra heading in the run-up to 2024? I think Maharashtra always sets its narrative right. The environment which is being created right now is by an unconstitutional government which hasn't been able to go back to the people and seek votes. If you are choosing to leave a party, let's see what happened in Madhya Pradesh when Mr. Scindia decided that he wanted to pull down his government just because he was probably not getting a Rajya Sabha or whatever it was. He pulled down his entire government. But they all went into an election and they won their seats. Yeah. If you think what you've done is spectacularly good, is something which is the right thing to do, then face the public. Go back to the people and ask for vote again. What stopped you? What factors do you think bind the MVA together? I think this belief of what Maharashtra stands for. Maharashtra stands for a culture of what Chhatrapati Shivaji Maharaj stood for. That we need a progressive state, a state which focuses on its people, not on their identities, and ensures that we create an environment which is of harmony and togetherness. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. It was a pleasure talking to you, and thank you so much for giving your time to the Quint and Quint Hindi. And Hail Ville Parle. And Hail Ville Parle. And the slow local trains. Yes, absolutely.
Can I take a quick selfie with you if that's okay? Yeah, sure.